a very interesting opportunity has come our way in the form of an IPO of Nureca Ltd. इस वीडियो में समझते हैं that is this opportunity even worth it or not. Let's go. Hi guys, my name is Goela. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. And to remind you again, we provide a full mentorship program in stock market. It's a lifetime mentorship program from the very basic to the advanced, from investing to trading. If you're interested, the link of that program is in the description below. Okay, now Nureca IPO. ठीक है, इसके लिए आई एम गोइंग टू ब्रेक अप द वीडियो और मैं आपको टाइम स्टैम्प्स दे रहा हूँ सो दैट यू कैन, इफ यू डोंट वांट टू वॉच द एंटायर वीडियो, यू कैन स्किप टू दैट स्पेसिफिक पार्ट, बट मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा वॉच द एंटायर video to understand it the best. First, I'm going to tell you the IPO details. Second, I'm going to tell you about the company, after which we are going to do the SWOT analysis of this IPO. SWOT analysis: S for strength, W for weakness, O for opportunity, T for threats, and ultimately I am going to give you my personal opinion on this IPO. Chalo. Now, starting first with the IPO details. Now, the name of the IPO is Nureca Ltd. The IPO price band would be from 396 rupees to 400 rupees per share. The IPO date opens on today itself. It has opened today itself, which is 15th February 2021, and the IPO will close day after tomorrow, which is 17th February 2021. The listing would be on 26th February 2021, and the lot size would be of 35 shares. That would be approx around 14,000 rupees for one lot. Okay? Now let's jump into the company. Let me tell you about this company. Now, Nureca Ltd is a healthcare and wellness products distributor. Technically मैं देखूँ ना, it's a healthcare and wellness products distributor. I would say it's more of a digital wellness company, अगर if I can put in something, digital wellness. So it's a company of its kind. We have not seen a company like this before. Digital wellness. Why? Because they sell everything online, and all the distributions, all the majorly distributions are being done online, and they are planning to do it online itself. Now, what does the company offer? Or company देती क्या है? Now, company now has a diversified line of products. सबसे पहला chronic device products, right? Chronic diseases के device products. Now, what are chronic diseases? Chronic diseases are those diseases that are, कैसे समझाएं इसको? Chronic would be that they last for a long period of time. जैसे I would say sarcoidosis is a chronic disease. I would say diabetes comes into that disease. Then BP problem बहुत लोगों को होती है. That comes into the disease. तो ये जो लॉन्ग टाइम के लिए रहती है, जैसे आई टेल यू, डायबिटीज रन्स इन माय फैमिली, एंड इसके लिए वी एक्चुअली यूज डॉक्टर ट्रस्ट प्रोडक्ट्स. तो अगर डॉक्टर ट्रस्ट इज अ ब्रांड नेम अंडर देम, सो फर्स्ट लेट मी टेल यू द ब्रांड नेम्स दे हैव अंडर देम. They have the brand name of Dr. Trust, they have the brand name of Dr. Physics, they have the brand name of TrueMom, right? And then क्रॉनिक डिवाइस प्रोडक्ट्स आते हैं डॉक्टर ट्रस्ट के अंदर. अभी आई विश आई हैड ब्रॉट देम टू द स्टूडियो. आई वुड हैव शोड यू. यहाँ पे मैंने कितने आई थिंक 5 या 6 ऑक्सीमीटर्स दिए थे डॉक्टर ट्रस्ट के. हमारी फैमिली थोड़ी ज़्यादा पैरानॉइड है, राइट? उसके बाद वी हैव थर्मोमीटर्स, वी हैव डिजिटल थर्मोमीटर्स, ऑल ऑफ डॉक्टर ट्रस्ट, वेइंग scale of Dr. Trust. Why? Because Dr. Trust is supposed to be the absolute best, right? Chronic device products हैं, अच्छा है. Then we have orthopedic products. Orthopedic products basically जो bone density के लिए होते हैं, वो अच्छा है. Then we have mother child products, और ये तो बहुत necessity होती है, and it has a very growing and a raging market in India. Why? Because you'll see earlier motherhood में our mothers, they did not, and our parents, वो कभी भी इस एक्सपेंसिव में इंडल्ज नहीं करेंगे ऑन मदरहुड एंड चाइल्ड प्रोडक्ट्स. बट अब इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं. दे आर ब्रेस्ट पम्प्स, देन दे हैव, और इनके क्रेट्स होते हैं बच्चों के, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ऑनलाइन आपको मिल जाएगा. सो आप खुद देखोगे, पहले आर पेरेंट्स नेवर इंडल्ज इन दिस. But now the new generation parents, we who are becoming parents, are indulging into this, which shows it has such a big market, right? Then it has nutrition, it has supplements, and this has lifestyle products जैसे weighing scale हो गए और बहुत सारी चीज़ें होंगी. Smart weighing scales, we recently bought a smart weighing scale जो body mass index और visceral fat और ये सब बताता है. And yeah, so उसके बाद I came to know the obvious that I am not healthy at all. Okay, so coming back to this, so it products wide range of products है, right? And this management, the entire team management is of Saurabh Goel and his wife, but majorly Saurabh Goel. And the market share of the total industry, market share मैं बता नहीं पाऊंगा. Why? Because
Again, there is no competition as such. Like I told you, it's one of a kind company in India. ठीक है. Now this is about the company. Now let me tell you about the SWOT analysis. Now let's do a simple SWOT analysis. मैंने डिसाइड किया है अब से हर IPO का ना we'll do a simple SWOT analysis जिसमें आपको simply पता चल जाए is this IPO worth your time or not. SWOT में सबसे पहले strength. Now what are the strengths of this company? The strengths which I personally really like: diversified product portfolio, because like I told you, it's got a massive range of product portfolio. Experienced promoters and management team. ठीक है, I know this company is fairly new, but still they are very experienced and they've done a great job with this company. Second, technology the company uses is extremely strong. Why? Because they are online. They are they are not the manufacturers, जो मैं आगे जाके cover करूँगा, but definitely जो technology they indulge is very strong. Then the use of AI, digitalization and data analysis is extremely strong here, which I feel any company for the future, it has to be ऑन द बेस ऑफ इंटरनेट ना किसी भी बिजनेस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सूट होना चाहिए जो इस कंपनी का है. एंड यूज ऑफ सिस्टम्स एंड ऑटोमेशन, डेफिनेटली दे डोंट हैव टू गो थ्रू द नॉर्मल सेल्स थिंग्स कि केमिस्ट को जा रहा है, केमिस्ट उसको वो क्या कहते हैं, केमिस्ट आपको रेफर करे कि बाय दिस प्रोडक्ट. दे हैव एवरीथिंग ऑनलाइन. एंड येस, I agree, online does not have a great market now, because हो सकता है in metropolitan, if you're living in a metropolitan, तो आप देखोगे हाँ हर्ष, I order online and I order specially these devices online. But क्या एक जो मेजर इंडिया है, रूरल इंडिया, जो टायर बी या टायर सी सिटीज़ में आता है, डू दे बाय ऑल द ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स ऑनलाइन? डू दे बाय ऑल दोज थिंग्स ऑनलाइन? एज ऑफ नाउ आई वुड से मेजॉरिटी नो. क्यों? जस्ट बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन. आई डोंट हैव एनी स्टैट टू प्रूव, बट बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन. जब भी आता है ना, कोई हॉस्पिटल से ही सामान खरीद के लाते हैं. ऑनलाइन खरीदना बहुत डिफिकल्ट है. इन द कोविड सिचुएशन वी डिड, बट ऑनलाइन खरीदना फॉर एटलीस्ट हेल्थ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स, ये डॉक्टर के रिकमेंडेशन में ही आदमी होता है. जब डॉक्टर बोलेंगे ना सर ये ब्रांड अच्छी है, तो आदमी ऑब्वियसली वो ही ब्रांड लेता है. बट आई फील इट इज स्लोली एंड स्लोली चेंजिंग. इफ you ask me as a person, I would actually prefer buying online. I would actually prefer buying Dr. Physics and Dr. Trust, because they have genuinely good quality products. Okay, now comes to the weaknesses. The weakness of this company is that they are not manufacturers. They don't manufacture the products. अब इसका disadvantage क्या होता है? Because they are not manufacturers, they will not be in control. ठीक है, बट इसका एडवांटेज क्या है? इफ द डिमांड रियली गोज डाउन, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दे आर नॉट मैन्युफैक्चरर्स. इफ द डिमांड रियली गोज अप, तो उनको इट विल बी स्टिल मच मोर ईजियर फॉर देम टू प्रोक्योर द प्रोडक्ट्स. तो मैन्युफैक्चरिंग इज अ ह्यूज हेडेक. दैट्स व्हाई यू विल सी आजकल जो भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बिजनेस आ रहे हैं, डू यू थिंक दे आर मैन्युफैक्चरिंग? थिंक अबाउट इट. कौन सा बिजनेस है जो आजकल आ रहा है विच इज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? नहीं, सब आ रहे हैं ज़्यादातर सर्विसिंग के लिए ही. सो येस, टेक्निकली दिस इज अ वीकनेस, बिकॉज वो अपनी प्राइसिंग कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इफ दे डोंट हैव मैन्युफैक्चरिंग विद इन देम. बट पर्सनली, दिस माई पर्सनल ओपिनियन, इज आई फील दैट manufacturing was the business of the past. अब the new businesses, the sunrise businesses are definitely based on technology, are definitely based on internet. They are service providers. So मेरे लिए ये एक अच्छी चीज़ है. ठीक है. Then comes the opportunities. Opportunities क्या है? Healthcare and wellness product sales are gaining by time. Obviously ये gain भी कर रहे हैं, ये products grow भी कर रहे हैं. Like I told you, there's a very increasing awareness that's going on even after the COVID-19 situation. हम सब के hygiene levels कितने better हो गए हैं. Right now we are washing hands every day. We are very cautious of touching anything outside or eating anything from outside. तो hygiene levels definitely बहुत high हो गया है. The government is spending more on healthcare itself. I know India का healthcare spending compared to other countries बहुत कम है, but still it is spending more. And personal level पे भी I feel people have realized that spending on healthcare is essential. और healthcare एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ पे अगर suppose आपने इस standard maintain कर लिया, now this standard will never reduce. If suppose someone is from the rural area, वो एक गाँव से आ रहा है, उसका healthcare standard क्या होगा? I'm assuming बहुत नीचे होगा. बट जब वो हेल्थ केयर स्टैंडर्ड बेटर करेगा, तो क्या वो उसको दोबारा हेल्थ केयर स्टैंडर्ड को नीचे लाएगा? नहीं. Irrespective of the money you earn, irrespective of a disposable income or our income, एक बार वो हेल्थ केयर स्टैंडर्ड हो गया ना, you will always maintain that. Think about yourself. अगर आपकी फैमिली में आप एक हेल्थ केयर स्टैंडर्ड मेंटेन करते हो, दैट यू गो टू दिस डॉक्टर, यू बाय दीज प्रोडक्ट्स एंड यू बाय दीज मेडिसिन्स. ठीक है. अब कल को सपोज यू स्टार्ट अर्निंग लेस, विल यू रिड्यूस योर एक्सपेंसेस ऑफ हेल्थ केयर? नहीं. यू विल रिड्यूस योर एक्सपेंसेस ऑफ लग्जरी. बट हेल्थ केयर ऐसी चीज़ है ना जिसमें एक्सपेंसिव बढ़ता ही है, कम होता ही नहीं. सो दिस इज अ मैसिव अपॉर्चुनिटी. Then a company has been growing at the CAGR of 122% from 2018 to 2020. 122%.
आई नो ये बहुत इंसेन है, बट टू बी वेरी फेयर मेजॉरिटी इनका ग्रोथ कोविड-19 सिचुएशन में ही आया है, वेयर देयर ऑक्सीमीटर्स वर ऑलवेज सोल्ड आउट. आई रिमेंबर मुझे 1 mg से खरीदने थे, दे वर ऑलवेज सोल्ड आउट एंड आई ओनली वांटेड डॉक्टर ट्रस्ट. दैट थर्मोमीटर्स एंड एवरीथिंग वर कंप्लीट सोल्ड आउट. तो येस दे हैव मेड अ मैसिव प्रॉफिट देयर एंड मेरे हिसाब से ये अच्छा है. क्यों? बिकॉज सबसे पहली चीज, nobody could have predicted that COVID-19 would happen, right? Nobody could have been ready for this. No company could have been ready for this. But still, this company was in a position to take the maximum advantage of it. तो अच्छी चीज है ना. तो this company, and if you listen or believe in the current socio-economic news, you will see that these kind of pandemics would be more and more regular. राइट पहले होता था वंस इन अ लाइफ टाइम, देन वंस इन अ डेकेड. अब करते करते पैंडमिक्स बढ़ते जाएंगे एंड नॉट ऑल्सो पैंडमिक्स, द अमाउंट ऑफ डिजीजेज एंड एवरीथिंग. सो आई फील दिस प्रोडक्ट्स इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड एंड डेफिनेटली CAGR ग्रोथ, हाँ मेजॉरिटी इनका कोविड-19 सिचुएशन में हुआ है, बट आई फील देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इन द फ्यूचर एज वेल. Now the threats, the final analysis of the SWOT analysis. Now the threats. First, competition. सबसे पहली बात, competition as such कुछ है ही नहीं, because like I told you, it's one of a kind company. Second, disruption due to technology. What is the disruption due to technology? अब इसमें risk हमेशा है. Why? Because there can be some other company which brings something better to the table. तो in the field of technology, when एक company technology में होती है, जैसे you'll see a lot of great investors, they don't want to invest in companies that relate to technology. क्यों? टेक्नोलॉजी में चाहिए होती है high R&D, research and development. जैसे Nokia. Now Nokia was a company which nobody could have predicted would have come like this. मतलब हम सब ने Nokia phones बचपन से यूज़ किए, मैंने तो एटलीस्ट यूज़ किए बचपन से. 8th स्टैंडर्ड में आई गॉट माई फर्स्ट Nokia फ़ोन, क्योंकि मैं ट्यूशन जाता था तो डैड ने मुझे अपना वो बहुत पुराना फ़ोन दिया था, बेटा रख ले, क्योंकि ट्यूशन जा रहा था तो डैड वांटेड सब कम्युनिकेशन विद मी. ठीक है, सो हम सब Nokia फोन देखें. कुड एनीवन हैव प्रेडिक्टेड द डाउनफॉल ऑफ Nokia? एब्सोल्युटली नॉट. So because in technology companies में you need heavy R&D and you don't know which technology company would have the future. ठीक है, so that is why this is a major threat to this company. जिस भी company technology में involve होगी उसका तो threat होगा ही होगा. Okay, now coming to my friend, my personal opinion. अब आप देखो, शुड यू अप्लाई और नॉट. आई एम गिविंग यू माई पर्सनल ओपिनियन. फर्स्ट, डू योर रिसर्च एंड जो भी मैंने आपको बताया है, थिंक अबाउट इट. आपको इसका पूरी डिटेल्स IPO की मिल जाएंगी ऑन द इंटरनेट. वो उसकी बैलेंस शीट पढ़ो, देखो, उसके बाद यू कैन ऑब्वियसली मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस. सेकेंड, इफ यू टॉक टू मी अबाउट माई पर्सनल ओपिनियन, देखो सबसे पहला, द IPO इज ओवर प्राइस्ड. इसमें कोई डिस्कशन है ही नहीं. क्यों? बिकॉज अभी मार्केट्स, द निफ्टी PE इज एट 41. अब जब भी मार्केट्स इतने ओवर प्राइस होते हैं ना, आप देखोगे ओनली दैट इज द टाइम व्हेन IPOs कम आउट. व्हाई? बिकॉज व्हेन द मार्केट्स आर ओवर प्राइस का मतलब क्या है? जनता मार्केट्स में घुस चुकी है, स्टॉक मार्केट्स में देयर इज हाई डिमांड, दैट्स व्हाई द मार्केट्स आर ओवर प्राइस. अब जब किसी को IPO लॉन्च करना है, वो इसी हाई डिमांड के प्राइस टाइम पे ही लॉन्च करेगा ना, वो कभी मंदी में तो लॉन्च करेगा नहीं अपना IPO. तो इसलिए आप देखोगे ऑल द IPOs जनरली आर एक्सट्रीमली ओवर प्राइस. आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट दिस IPO, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरली ऑल IPOs, क्योंकि जनरली सारे IPOs इफ यू सी इन द पास्ट 5 years वो हमेशा पीक्स में आते हैं व्हेन मार्केट्स आर ओवर प्राइस, so that they can sell at the IPO at the premium also. और एक अच्छी डिमांड भी होगी IPO के लिए, और IPO पूरी फुली सब्सक्राइब भी हो जाएगा. राइट नाउ, शुड यू अप्लाई फॉर इट और नॉट? आई हैव अ न्यूट्रल स्टैंस ऑन इट. व्हाई? बिकॉज कंपनी इज डेफिनेटली फॉर द फ्यूचर, बट फॉर मी मार्केट्स आर वेरी ओवर प्राइस्ड राइट नाउ. तो मेरा इसमें थोड़ा न्यूट्रल स्टैंस है. पर्सनली वुड आई बाय इट? आई वुड नॉट बाय इट. बट इफ इट्स योर फर्स्ट IPO देन आई वुड से एक बार ट्राई तो करना बनता है. गो फॉर इट. एंड इफ आई टॉक अबाउट लिस्ट करते हैं, शुड द IPO प्राइस गो अप? अगेन नो वन कैन से दिस, बट इफ यू लुक एट द करंट मार्केट सेंटिमेंट्स, probability तो यही है that the markets will go up. But should you hold this IPO or this Nureca Ltd for the long period of time? I would say yes. Long period of time के लिए company अच्छी है. But personally, again this is my personal opinion, I will not apply for the IPO. I will wait for the price to come down. जब इसके reasonable level price हो जाएंगे, when the markets are reasonably priced, then investing in this company for a longer term, I would not have any hesitation to do it. Why? Because this company is of the future. Like I told you, I love companies that are around technology and the internet and that are service providers and does not have the headache of manufacturing. So yeah, that was my take on Nureca Ltd. IPO खुल चुका है. If you're interested, अब तो I think जब आप वीडियो देखोगे तो मार्केट्स बंद हो जाएंगे. कल ट्यूसडे है, कल जाओ और वहाँ पे जाके जस्ट अप्लाई फॉर दिस IPO. इफ इट्स फर्स्ट टाइम आउट से ट्राई करो. 14,000 है, ज़्यादा मेजर नहीं है. एंड इफ यू लक यू विल हैव द IPO, और आई एम अज्यूमिंग अच्छा ही रहेगा बिकॉज मार्केट्स आर ओवर प्राइस्ड एंड सेंटिमेंट इज गुड. सो दैट वाज इट फॉर टुडे. एंड या एक काम करो, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट IPOs, आदित्य की वीडियो देखना. दैट IPOs आर नॉट ऑलवेज द मोस्ट प्रॉफिटेबल थिंग. मैंने यहाँ बनाई है, अगेन नॉट बीइंग अ पेसिमिस्टिक, बट वो वीडियो देखना, आपको समझ आएगा प्रॉपर्ली. सेकेंड,
और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नीचे कमेंट करो व्हाट्स योर ओपिनियन। और यार हमने बहुत वीडियोस बनाई है, बहुत इंटरेस्टिंग और कमाल की वीडियोस बनाई है, उन सबको देखो, जाओ खुल के जाओ और हर चीज़ देखो और मुझे हर चीज़ में रिव्यू बताओ, ठीक है। टिल दैट टाइम माय फ्रेंड, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। गिव माय रिगार्ड्स टू योर फैमिली, लव to young ones. This is Harsh Goela from Goela School of Finance, financially empowering you.